there is a new topic completely. या ऊपर already मो class करी सारी छे. I have taken that PDF, I have made that videos. Still, আজি এই ক্লাস রে আমি সামনা সামনে আলোচনা করিবা. পিলে প্রথম কথা জানি থাও, there is no substitute of hard work. Hard work रो कोनोसी substitute ही नहीं. You can't get any substitution for your hard work. जेते परिश्रम करिवो से परिश्रम को substitute करा जाई परिबो नहीं. You can't get substitute for hard work. प्रथम जिंस. First thing this is. But still there are some tricks and tips that can be applied to study. मन रखिबा. किछि tricks and tips थाए जहाकू अप्लाई करा जाई परिबो. We can apply in our study. आमे पाठरे अप्लाई करि परिबा. नहीं, hard work and planning study, these are two sides of coin. Hard work and planning study. Planning study मु कहूची, I'm not telling only about study. Planning study. So you are to study with a particular plan. गोटे निश्चित योजना प्रस्तुत करिकी से हिसाब रे पाठ पढ़िबा पई पड़े. जदि आम प्लान सहित आम हार्डवर्क को मिसे मिंगल कर दौचे, इफ विल एड हार्डवर्क एंड विल मेक ए प्लान एंड विल फॉलो दैट प्लान. योजना समस्त तैयारी करते किंतु टाइम टेबल समस्त तैयारी करते किंतु केते जण से टाइम टेबल को फॉलो करते. दैट इज इंपोर्टेंट. पिले मन रखिबा पाठ समस्ते पढ़ते किंतु केवल 5% पिला पाठ को माने तांकर लक्ष्य थाए पाठ पढ़ाटा. आउ दे आर द टपर्स. जो 5% पिला भावंती जे मोर पाठ पढ़ाटा होची मोर ड्यूटी, स्टडी इज माय ड्यूटी, दे आर द टपर्स. से माने होचंती टपर्स. मो कथा बुझी परथो समस्ते. पाठ समस्ते पढ़ती. आईएएस पई 3 लाख पिला प्रिपरेशन करंती. 3 lakhs candidate every year sits in the examination, preliminary examination of IAS. And thereafter 10,000 students are, they get selected to sit in the written examination. And among those 10,000 students, only 300 students are getting selected for that job. Those 300 students, say 300 पिला भी तुम भले मनीषो, they are also human being because they have their aim and perspective clearly printed in their brain. कारण तांका मस्तिष्क रे तांकर लक्ष्यटा स्पष्ट होई कि थाए. That's why they get success. तो पिले एई जो मु क्लास टा करिवि वर्तमान मु कहिबि what are the 5 tricks to solve MCQ. These questions, एई जो solving tricks मु कहिबि, these solving tricks are not applicable for all the question. मु केवल कहूची सब क्वेश्चन पाई एप्लीकेबल नुहंते. जो क्वेश्चन तुमको हार्ड लागुची, इफ यू डोंट नो द आंसर, तमे जो प्रश्न जानी ना हो कि तुमको लागुची तमे तार उत्तर रे कंफ्यूज अछ, ताहले एई ट्रिक्स गुडा को अप्लाई करिबा. 50 टा एमसीक्यू रु मोर 45 टा एमसीक्यू हे गला. 5टा एमसीक्यू मोर हो नहीं. दैट 5 एमसीक्यू मु केमिति सॉल्व करिवि. दैट मींस मोर एटा तुमको कहिवार कारण हला, एई क्लास टा करिवार कारण हला जे हमरो 100% मार्क हमें पाइबा. हाउ वी विल गेट 100%? ठीक अछि. हाउ टू स्कोर 100%? दिस इज द क्लास. दैट्स व्हाई दिस इज द क्लास. तो प्रथम कथा पिले, एंड दिस इज मु कहू नहीं मो मनरू. आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम माय ब्रेन. मु कहूनी एटा मो मनरू कहूनी कि तमन को कंफ्यूज कर. दिस इज द बुक. लुक, दिस इज द बुक. हाउ टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. दिस इज द बुक. आई एम टेलिंग व्हाट एवर आई टोल्ड. वासुदेव पंडा केबे मन इच्छा मन गढ़ा कहानी कहे नहीं. जहा कहे विथ प्रूफ. बिना प्रूफ रे मु काहाकू केबे पर्यंत इनफॉरमेशन देई नहीं विदाउट एनी प्रूफ. आ मो पाखरे से बळे इनफॉरमेशन नहेले मु पिला मान सहित शेयर करे नहीं. तो प्रथम जिंस मु कौन कहली, जदि एमसीक्यू मोर
आसू नाही गोटे एमसीक्यू मोर आसीला नाही एठी आमे मु कहबी पूरा एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स तापर पिक द राइट आंसर ए भलिया जो प्रश्न गुडी आछी जो 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न जो प्रश्न रे अल्टरनेटिव रहिबो जो प्रश्न रे वेयर अल्टरनेटिव्स आर देयर इन दैट क्वेश्चन ए जो फार्मूला मु कहबी एप्लीकेबल प्रथम कथा फर्स्ट सपोज देयर आर 4 ऑप्शन who was William Wordsworth मु गोटे एनी एमसीक्यू उठाऊँ मु ऑप्शन ए बी सी डी मु चार्ट ऑप्शन देली व्हाटएवर तो ए कंडीशन रे कौन हम पिले सपोज मते आसीला नहीं ट्रिक नंबर वन दिस इज ट्रिक नंबर वन मन रखिबा ट्रिक नंबर वन तो मते मु या पूर्वर प्रश्न सपोज यहाँ हूँ 5 नंबर प्रश्न मु 4 नंबर प्रश्न उत्तर ऑलरेडी कर सारी 4 नंबर प्रश्न उत्तर मु ऑलरेडी लिखि सारी मन रखिबा ठीक कंसंट्रेट करके शुणिबा पिले क्लास रे कंसंट्रेट करके शुणिबा तो 4 नंबर प्रश्न उत्तर मु ऑलरेडी लिखि सारी आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई एम नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एठी कौन है एक जो 4 नंबर प्रश्न रे मु ऑलरेडी कौन कर सारी मो ऑप्शन ए टा मोर राइट है कि अच्छी राइट आंसर टा होची ऑप्शन ए आई नो इट वेरी वेल मु जानी ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर ओके ताहेले कौन हबो यार प्रश्न उत्तर मते आसु नहीं आउ एथरे कौन अच्छी 4टा डिफरेंट ऑप्शन अच्छी जेमती हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ ए पोएट ऑफ नेचर एथरे लिखाई छी ए पोएट ऑफ ब्यूटी एथरे अच्छी ए पोएट ऑफ नेचर देन ए पोएट of Ireland, then a poet of Australia. Whatever things are there. I'm not telling. No. Don't tell me the answer. I don't want to tell. Don't tell me the answer. तो मु ए हेची मु कहूची ए ट्रिक आमे जानी नु. Think that you don't know. तमे सपोज जानी नो. तो ए केस रे कौन हम पिले इन दैट केस यू आर टू स्टडी जहाँ कहूँ व्हाट एवर स्टडी मु बही धरिकी क्लास करुचे विथ द बुक्स आई एम टेकिंग द क्लास विथ द बुक्स सो एठी एई केस रे मैक्सिमम क्वेश्चन सब बेले जेतेबेले 4 ऑप्शंस आर देयर जेतेबेले 4 ऑप्शन थाए जो क्वेश्चन रो उत्तर तुमको जना नहीं यू शुड गो फॉर either B or D. Sorry, B or C. You will go for B or C. And most probable answer lies there with B. शहेटा एग्जाम शहेटा परीक्षार सेट को जिते एनालाइज कराई से जहाँ रिजल्ट बाहरी मु से रिजल्ट उपरे कहूँ तुमको दिस द फर्स्ट ट्रिक जितेबाला कौन प्रश्न उत्तर आसुना आ तुम जानिच जे ऊपर प्रश्न उत्तर ए अच्छी तल प्रश्न उत्तर डी अच्छी बोली जानिच मझी प्रश्नटा तुमको आसुना यू शुड गो फॉर बी यही केस रे केते परसेंट राइट हुए एमसीक्यू ही आसीबो यही केस रे केते परसेंट राइट हुए सर कौन अच्छी बही रे व्हाट इज रिटन हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग राइट आंसर in this case 80% chance is there of getting right answer 80% chance is there of getting the right answer if you are choosing B first trick एटा हैला first trick second trick पिला वर्तमान second trick को जीवा second trick टा कोन वर्तमान मु कहू छी second trick what is the second trick वर्तमान suppose चारिटा ऑप्शन अछि A B C and D. एतरा अछि suppose waiter, anything waiter, then rubber and teacher and all the above. Good example. This is an example only. पिले मने रखिबा जे कौनसी प्रश्न
जेकोसी प्रश्न जो प्रश्नर उत्तर तुमको आसुना मु कहूँ बारंबार जो प्रश्नर उत्तर आसुना से केस रे एटा ओनली अप्लाई करवा अलग केस रे अप्लाई करवा नहीं जदि जो प्रश्नर उत्तर आसुची से केस रे अप्लाई करवा अलग केस रे अप्लाई करवा नहीं जो प्रश्न हमको आसुची से प्रश्न रे अप्लाई करवा नहीं in this case if there is all of the above and none of the above jodi if a multiple choice question is consisting of all of the above and none of the above 90% chances are there that the last part all of the above or none of the above is the right answer. This is the second trick. तो जदि हमको आसिला नहीं प्रश्नर उत्तर हमको आसु नहीं एंड सेठी कौन अच्छी ऑल ऑफ द अबव एवं नॉन ऑफ द अबव अच्छी देन इन दिस केस यू आर टू गो फॉर दिस आंसर ऑल ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव. दिस इज ट्रिक नंबर 2. ट्रिक नंबर 2. Let's go to trick number 3. 3 number trick. Trick number 3. एबे गोटे जिनस होउछि पिले जे ट्रू एंड फॉल्स जेमति हमर साहित्य रा होउछि आउ किछि जगह रे होउछि ट्रू एंड फॉल्स. सपोज ट्रू एंड फॉल्स रा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होछि ट्रू एंड फॉल्स. सो विलियम वर्ड्सवर्थ is a poet of nature. Whether the statement is true or false. True or false. A case रे true A है true B है false. A case रे. In this case true or false. If there is true or false. In this case what to pick up. Suppose तमे जानी ना हो मु सब बेले कहूँ जो प्रश्नर उत्तर हमको आसु नहीं से ही प्रश्न रे अप्लाई करिबा अलग कौन सी प्रश्न रे अप्लाई करिबा नहीं. जो प्रश्नर उत्तर आम जानुचु से प्रश्नर उत्तर आम लिखिबा जो प्रश्नर उत्तर आसु नहीं से ही केस रे ओनली अप्लाई हबो ए फॉर्मूलाटा. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. सो इन दिस केस द स्टडी सेज स्टडी जहा कहे जो क्वेश्चन सेट रो स्टडी जहाँ कहे जे 95% दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बियर द आंसर ट्रू बियर द आंसर ट्रू तो वी विल गो फॉर द ऑप्शन ट्रू. जदि आसिला नहीं ट्रू एंड फॉल्स ता आसिला नहीं देन वी विल गो फॉर दिस सीक्वेंस वी विल गो फॉर ट्रू. ट्रू टाकू सत्य टाकू कारण मिछ अपेक्षा सतटा बेसी थाए 90% चांसेस थाए जो क्वेश्चन आंसर हमको आसला नहीं ट्रू. दिस इज ट्रिक नंबर 3. ट्रिक नंबर 3. ट्रिक नंबर 4. 4 नंबर ट्रिक. ट्रिक नंबर 4. व्हाट इज द ट्रिक नंबर 4? लेट मी टेल यू. ट्रिक नंबर 4 इज देयर. ट्रिक नंबर 4 रे कोन हबो ए बी सी डी चारिटा आंसर अच्छे. चारिटा आंसर रु एटा दिस इज शॉर्ट दिस इज शॉर्ट दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट. माने उत्तरटा छोटो छोटो हेकरी अच्छी आउ एटा गोटे लंबा उत्तर अच्छे. दिस इज अ लॉन्ग आंसर. दिस इज द लॉन्ग आंसर. इन दिस केस प्रश्न उत्तर हमको आसिला नहीं. वी डिडंट गेट एग्जैक्टली व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. वी आर कंफ्यूज्ड. हमको आसू ही नहीं. देन द स्टडी सेज दैट द लॉन्ग आंसर वट एवर आंसर इज लॉन्ग दैट आंसर इज 98% करेक्ट इन दिस टाइप ऑफ केसेस. सो विल गो फॉर लॉन्ग आंसर. यही उत्तर को आमे टिक करिबा लॉन्ग आंसर. ओके नेक्स्ट ट्रिक.
let me look the book and tell you the next trick. What is the next trick? Okay, next trick. Now the irrelevant trick that is called. Yes, for all subject. For all subject. The irrelevant trick is then, yes. Yes. So option A, option B, option C, option D is there. Four elements are there. Four questions are there. ए भितरे कौन है तीनटा आंसर पाखापाखी सेम है कि अच्छे तीनटा आंसर. So the book says a strategy for standardized test like the set to eliminate the outlier, avoid guessing an answer that is too different from the other. That is too different from the others. तीनटा जदि तीनटा भितर सपोज एठी अच्छे कौन एप्पल, ऑरेंज, बनाना and cauliflower. Apple, orange, banana and cauliflower. I have written four things. In this case, what to do? First of all, eliminate the odd one. Odd one taku eliminate kariba. First one taku eliminate kariba. Cauliflower must be eliminated. Then we'll go for option B, orange. Remember this. So जोटा सबुठ आउटलाइड द आउटलायर्स, आउटलायर द आउटलायर्स या को कहा जाए जोटा सबुठार ऑड थिबो से ऑड टाको एलिमिनेट करिबा एवं विल गो फॉर ऑप्शन बी. इन थ्री इफ थ्री चॉइसेस आर देयर, जो केसरे तीनटा चॉइस थाए, मोर ऑफन द सेकंड चॉइस और द मिडिल चॉइस is more correct. Middle choice ta more correct. So these are the 5 tricks. These are the 5 tricks that I want to tell you today about solving multiple choice question. आउ थोड़े कहबा में चाहिए पिले जे there is no substitute of hard work. Hard work रा कोनोसी substitute नहीं. There is no substitute of hard work. ए ट्रिक मु देदेली यार अर्थ नुह तुम सब टपर हो, तुमको पढ़ा पड़ो एवं जो गोटे दुईटा प्रश्न आमको आसब ना से प्रश्नर समाधान आम करवा यूजिंग दिस मेथड. यही मेथड यूज करिके गेटिंग मी. सो वी मस्ट स्टडी. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क and there is no shortcut to success. This is the message for you. And one more thing I want to tell, beta listen, killing time, the message for the day, killing time is suicide in installment. Remember the phrase, killing time is suicide in installments. If you are killing time, that means you are doing suicide. Killing time is suicide in installment. So don't kill time. ओके काली ट्रांसलेशन पढ़ाई क्षीरसिंधु श्योर बेटा आज मु भूली गली काली मु ट्रांसलेशन पढ़ाई द ट्रांसलेशन स्किल काली ट्रांसलेशन स्किल ऊपर कथा हवा. ओके सी यू देयर, बाय बाय.